हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. So let's start. The first question, what are phytohormones? Name them. Phytohormones की अगर अपन बात करें तो plant hormones are known as phytohormones. प्लांट हॉर्मोन्स को ही क्या कहा जाता है? फाइटोहॉर्मोन्स. क्लियर? सो द क्वेश्चन was what are phytohormones? Plant hormones are known as phytohormones that you are finish it till here. मतलब ऐसे नहीं अपन इतना लिख दें, will not end up till here. Little bit more about it. What are they? So plant hormones are known as phytohormones that perform. What does hormone do? That perform control and coordination in plants. So क्या करते हैं? Control and coordination in plants. What enter here? Plant hormones are known as phytohormones that perform control and coordination in plants. Clear? Now the next part, name them. You have to write the name of the phytohormones. So next, how will you write it? There are 5 plant hormones. The first one that we'll write is auxin. Second, gibberellins. Third, cytokinin. Fourth, abscisic acid. Fifth, ethylene. These are the 4 plant hormones. अब अगर थोड़ा सा हम इनके बारे में बात करें, सो ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि प्लांट्स में क्या प्रमोट करते हैं? ग्रोथ. एंड एब्सिसिक एसिड इज अ growth inhibitor. Abscisic acid, growth inhibitor. Ethylene की बात करें, ethylene is both promoter as well as inhibitor. ये promoter भी है and inhibitor दोनों. खैर इतना हमें सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है, हमें बस इतना लिखना आंसर में that plant hormones are known as phytohormones that perform control and coordination in plants. जो plants में control and coordination perform करते हैं, 5 तरीके के plant hormones होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. अगर फर्दर इनके बारे में पूछा जाए, जैसे एक और तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से हॉर्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, तो अपन लिख सकते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन तीनों ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब ये प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं. एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है. एंड इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह वर्क करता है, मतलब ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी मदद करता है, साथ ही साथ सीड्स जर्मिनेशन में साइटोकाइनिन के साथ साथ इथाइलिन भी वर्क करता है. So clear to all of you? This way we are going to answer the question if it comes, and it's one of the most important questions. मतलब अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से क्वेश्चंस आएंगे, they will ask about plant hormones definitely. So the names you should remember of it. Clear? And the plant hormones word ना use किया जाए, the phytohormones word could also be used. Now we'll move on to the next important question. The next most important question, second important question. Name the hormones produced by the following glands.
कौन कौन से following glands they have given? Adrenal gland, testis, and ovary. These are the glands that they have given. Now, how will we answer it? We will answer it. Adrenal gland. Adrenal gland. Which hormone? They've just asked about the hormone. Name the hormones produced by the following glands. So again, अपन repeat में लिखेंगे. For the A part, adrenal gland produces hormone adrenaline. Next, for testis. Testis जो है, ये भी hormones produce करते हैं, and that hormone is known as testosterone. Similarly, ovary जो hormone produce करते हैं, that is estrogen and progesterone. Now, this we have to write down. अपन को question भी copy करके then we have to write down the hormones produced by them. Directly अपन इस तरीके से hormones के name नहीं लिखेंगे because then that answer does not becomes presentable. Clear? So this is the proper way to write the answer. Now, adrenal gland hormone produce करता है adrenaline. अगर इसके functions भी पूछ लिए जाए तो adrenaline is responsible for fight, flight and fright response. Emergency hormone है. मतलब कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, एट दैट टाइम दिस हार्मोन इज रिलीज्ड. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट टेस्टिस, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन अगेन इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, then broadening of the shoulders. So for these secondary sexual characters, testosterone is responsible. जो produce कौन करता है? Testis. Similarly, ovary produce करता है estrogen and progesterone, which is also responsible for secondary sexual characteristics in females. Clear? Like development of breast, menstrual cycle, high-pitched voice. For all these secondary sexual characters, estrogen and progesterone is responsible. Clear to all of you? So this was our second most important question. Let's move on to the third most important question. Third most important question. Trace the sequence of events when bright light is focused on your eyes. अब ये क्या है तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन? सो वी जस्ट हैव टू राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. Sequence of events simply will not write it theoretically. We'll make a flow chart and then we will write. तो इससे आंसर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल एंड एग्जामिनर के लिए इजी टू चेक भी होता है एंड लगता है कि हाँ द पर्सन इज हैविंग नॉलेज, राइट? सो स्टिमुलस यहाँ पर क्या गिवन है? स्टिमुलस इज ब्राइट लाइट. क्लियर? अब ब्राइट लाइट अगर स्टिमुलस है, अब रिसेप्टर्स किसके होंगे? रिसेप्टर्स होंगे हमारी आईज के. आईज के रिसेप्टर्स लाइट को रिसीव करते हैं. आईज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, तभी तो अपन देख पाते हैं. अब रिसेप्टर्स के बाद नेक्स्ट द मैसेज विल गो टू द सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन्स ये मैसेज लेकर जाएंगे कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज. फिर क्या होगा? This message will go to the relay neurons. अब इतना बताओ, हमारी आईज जो है इनके पास कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड की ब्रेन? The nearest organ is brain, not spinal cord, right? So अब इस केस में डिसीजन कौन लेगा? Brain, because it is a cranial reflex. Next, what will happen?
Now it will go to the motor neuron. मतलब relay neurons ने जो decision लिया कि bright light focused हो रही है, now what you have to do? You have to reduce the size of the pupil ताकि retina बच सके from damage. So ये message को relay neurons और motor neurons को देंगे. Motor neurons इस message को transfer करते हैं to the effector and effector muscles. इस बार effector muscles किसके होंगे? Of course आपके eyes के होंगे. effector muscles, ciliary muscles present in our eyes. इसके बाद क्या होगा? Response. Now the response will be what? Pupil क्या हो जाता है? Contract. Pupil contract हो जाता है ताकि retina उस higher beam से damage ना. So this way you have to trace the sequence of events that occur when a bright light is focused on your eyes. And this whole that pathway is called what is it? It's reflex action. And कौन सा reflex है? Write down in bracket cranial reflex. That's the more presentable and better way to write the answer. If the question is asked, trace the sequence of events that occurs when bright light is focused on our eyes. Clear? Now, we'll move on to the fourth most important question. The fourth most important question, that is, differentiate between endocrine and exocrine glands. You have to write down the difference between endocrine and exocrine gland. जब भी हम difference between लिखते हैं, always make a column and then write the difference between. कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन एक endocrine लिखा, we'll writing 3-4 lines about it, then exocrine next heading 3-4 lines about it. No, you should always make a table. One side you write about endocrine glands and the other side write about exocrine glands. अब क्या करें? We have made a proper table. That's right, proper table. Now write down the first point. जैसा कि हमें पता है endocrine gland और exocrine gland का major difference होता है. Endocrine glands में क्या present होते हैं? क्या होते हैं endocrine? Ducts present नहीं होते. And exocrine में क्या present होते हैं? Ducts. So that will be the major difference. Endocrine, they do not have duct. उनके पास duct present नहीं हो. Exocrine, they have duct. और endocrine क्या है? Ductless glands और exocrine के पास duct होती है. duct के थ्रू अपने secretion को release करते हैं. duct मतलब एक ट्यूब, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये अपने सेक्रेशन को क्या करते हैं? पोर करते हैं टू द टारगेट ऑर्गन. एक्सोक्राइन का दे पोर देयर सेक्रेशन इनटू द ब्लड. ये अपने सेक्रेशंस को ब्लड में पोर करते हैं. एंड अगर हम इनकी बात करें, इनका पॉइंट क्या होगा? They pour their secretion to the target organ. ये अपने secretions को कहाँ pour करते? Directly to the target organ. Clear? Next अगर अपन बात करें, अब एक difference क्या हो गया? They do not have ducts, they have ducts. दूसरा they pour their secretions into the blood. अब blood उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक इनके secretions जाते हैं. जबकि एक्सोक्राइन अपने secretions को टारगेट ऑर्गन पे ही पोर करते हैं. जैसे कि सलाइवा है, सलाइवा ग्लैंड्स ने सलाइवा सेक्रेट किया तो वो माउथ में ही जाएगा, हर जगह नहीं फ्लो करेगा.
तीसरा पॉइंट, दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हमेशा? एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। एक्सोक्राइन, दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट शुड बी ऑफ एग्जाम्पल्स। उसका एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे? We can write any example. Example like thyroid gland. And अगर अपन एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल की बात करें, so one of the most common example, salivary gland. Clear? So this will be going to write it. Endocrine glands, they do not have duct. Exocrine में duct present होती। एंडोक्राइन अपने सेक्रेशंस ब्लड में डालते हैं, जबकि एक्सोक्राइन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जिस ऑर्गन में सेक्रेशन पहुंचना हो वहीं पहुंचता है। क्लियर? एंडोक्राइन हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स, जबकि एक्सोक्राइन प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। एंड देन द लास्ट पॉइंट शुड बी ऑफ एग्जांपल्स। दिस वे यू शुड राइट द आंसर, एंड यूजुअली आंसर 3 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। क्लियर? 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में नहीं, यूजुअली 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इससे ज्यादा मार्क्स की कभी डिफरेंस बिटवीन नहीं आ सकते। इवन 2 मार्क्स के लिए हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख देने चाहिए, हाफ मार्क फॉर ईच, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now we'll come to another most important question. I hope so this question is clear to all of you. We'll move on to the next question. Let's write down the fifth most important question. That is, what are the different parts of hind brain write their functions, write their functions. Hind brain के कितने parts होते हैं? 3 parts. So this way we'll write the question. Hind brain have 3 parts. Hind brain के पास कितने parts होते हैं? 3 parts. The first one that we will write is cerebellum. Cerebellum. Cerebellum के functions क्या है? They just asking the functions. Always answer to the point and according to the marking scheme. Suppose it's a 3-mark question, just write down cerebellum. It controls body balance and posture. ये क्या कंट्रोल करता है? बॉडी का बैलेंस और पॉस्चर, मतलब जैसे हमारे खड़े रहने का पॉस्चर, हमारे बैठने का पॉस्चर, हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, जो अपन प्रॉपर्ली स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम. द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेड्यूला. मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? मेड्यूला इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, यानी कि वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ आवर हार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं. एंड रिफ्लेक्स एक्शन, अभी जैसे अपन ने बात करी थी क्रेनियल रिफ्लेक्स के बारे में, तो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. पर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? मेड्यूला. थर्ड पार्ट pons. It controls respiration. ये मेजर सेंटर है जो क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन को. क्लियर? सो दिस इज द वे we'll write down. Hind brain has 3 parts. हम हर एक पार्ट का नाम और उसके 1 लाइन में प्रॉपरली फंक्शंस लिखेंगे.
So इस तरीके से we are going to answer if it's a 3-mark question. Clear? More than 3 marks or 2 marks, the questions cannot come from this chapter. Usually this chapter has a very less weightage of 2 to 3 marks. Clear to all of you? I hope so. These were a few important questions, 5 most important questions from the chapter Control and Coordination. Further, 10 more important questions are also given in the description of this video. Do refer to those questions as well. Thank you, students.